सो हेलो एवरीबॉडी, मैं तरुण अ प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट और आज की क्लास है डे 30 और आज का टॉपिक रहेगा अरेबिक डिज़ाइन, जो कि मैं बहुत शॉर्ट डिज़ाइन सिखाऊंगा, वो भी एक नॉर्मल रियल हैंड पर, जिससे आपको बहुत प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे डिज़ाइन को कैसे कनेक्ट करके कैसे प्रॉपर तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने सेपरेट एलिमेंट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कैरीज पढ़ी थी और एडिशनल एलिमेंट्स पढ़े थे, जो कि हम लोग अरेबिक डिज़ाइन में अच्छे तरीके से कनेक्ट करके लगाते हैं। ओके, सो आज की क्लास में प्रॉपर लेआउट सेट करना सिखाऊंगा, किसको इसको कैसे मतलब बड़ा इंक्रीज़ करना होता है, कैसे एलिमेंट्स को ऐड करके कनेक्ट करना होता है। ठीक है, सो अगर कोई न्यू आया है चैनल पे सब्सक्राइब करें और भी अपडेटेड डिज़ाइंस के लिए, बिकॉज एक फ्री वर्कशॉप चल रही है। प्रॉपर जो न्यू हो आप नॉर्मल सब्सक्राइब करके आप कनेक्ट हो सकते हैं फॉर अपडेटेड डिज़ाइंस के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा फ्लावर बनाया है। ठीक है, फ्लावर बनाने के बाद एक नॉर्मल सी उसके बाद कैरीज़ ऐड होंगी। कैरीज़ के बाद मैंने इसमें सिर्फ इतना रखा है ताकि बिगिनर्स को भी काफ़ी फ्रेंडली लगे कि सिर्फ इसमें नॉर्मल एडिशनल एलिमेंट रखे हैं, छोटा सा फ्लावर्स, दो साइड्स कैरीज़ रखी हैं, उसके साथ अटैच एलिमेंट्स, फिर अगेन कैरीज़, फिर फ्लावर, फिर अगेन कैरीज़, फिर फ्लावर। नॉर्मल जो बेसिक बिगिनर है वो आप नॉर्मल आप इस तरीके से स्टार्टिंग में यूज़ करें। अगर बहुत ही ज़्यादा मैं एडिशनल बता दूंगा तो शायद आई थिंक कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे भी 2 से 3 लेआउट्स लेकर आऊँगा मैं प्रॉपर रियल हैंड पर, तब आप देखें। लेकिन आज का बहुत बेसिक है, आज आपको प्रॉपर तरीके से नॉर्मल से 2 या 3 एलिमेंट्स के साथ ही पूरे डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे। फिलिंग भी वही प्रॉपर मैंने जो डिज़ाइंस में आप लोगों को फिलिंग सिखाई है नॉर्मल, जो आपको इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने फिलिंग्स का पूरा एक क्लास सेपरेट लिया है, उसमें जो फिलिंग्स मैंने यूज़ की है बहुत ही ईजी, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। आप उसको इसी तरीके से आपको सारी फिलिंग्स यूज़ नहीं करनी है। जितनी कैरीज होंगी आपको 2 कॉम्बिनेशन लेने होंगे और 2 से 3 फिलिंग्स ही आपको पूरे डिज़ाइन में फिल करने होंगे। और कोई न्यू चैनल पे आया है वो फिलिंग नहीं जानता तो आपके प्रीवियस क्लासेस आप देखिए, हर एक क्लास को प्रॉपर डिटेल में आपको समझाया गया। आप जाके देख के प्रॉपर तरीके से और तब आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी जितना किया हुआ है, आपको 2 साइड कैरी लेनी है, ऊपर से एडिशनल एलिमेंट्स लेने हैं, उन दोनों के बीच के सेंटर में आपको फ्लावर बनाना है। इट कुड बी एनीथिंग, आप कैसे भी फ्लावर बना सकते हो, आपको जो पसंद हो रहा हो। कैरी भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो जैसे भी, बिकॉज मैंने 4 से 5 कैरीज आपको सिखाए थे, मैंने ये सिंपल कैरी लिया है आपको, इसीलिए मैंने वेरिएशंस काफ़ी सारे दे दिए। डिज़ाइन का लेआउट मैंने बताया है, अब आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो, बिकॉज नाम ही है सिग्नेचर। आपको जैसे अपने डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग जैसा बनाना है वो बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बना पाएंगे। मैंने आपको सिर्फ सिस्टमेटिक लेआउट दे रहा हूँ कि 2 साइड कैरी जाएगा, बीच से फ्लावर जाएगा और साथ में एडिशनल एलिमेंट जाएगा, ताकि तभी तो मैंने सिर्फ रेस्ट एरिया से डिज़ाइन को स्टार्ट किया है, ताकि आप प्रॉपर वहाँ से लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत छोटा भी होगा। और एकदम से अगर आप लॉन्ग डिज़ाइन बनाएंगे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी रहेगी, अगर ख़राब भी हो कोई डिज़ाइन तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाए। छोटी चीज़ से लीजिए, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाइए, लेकिन अच्छा हो तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। और आगे अगर मैंने कुछ क्लास में ऑल्ट्रेशन नहीं किया तो मैं 2 से 3 लेआउट इवन संडे को लेकर आऊँगा, और आई थिंक मैं लाइव लेकर आऊँगा। ठीक है, जिसमें आप लोग प्रॉपर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो मैं आपको लाइव कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कैसे क्या करना है। ओके, तब आप देख सकते हैं। एज अ सी दैट Be better on my own. Sometimes what's right is wrong.
till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you are the one. And I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you are the one. And I can't wait to see you and I didn't understand that you are the one. And I can't wait to see you
was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I